Assalamu alaikum, dear students. Today our class will be from class 10th biology, and the topic we'll be dealing today is environment. As we all know that whatever surrounds us, we say that it's environment, and these days we are too much concerned about our surroundings. So if we have to define what the environment is, it's not only something which is related to the biology. Actually, whatever the political status, the economic status, the behavior, everything, whatever surrounds us, it comes under the environment. But what we will be dealing today from your book of sciences, that is the biology, the environment that we will define, और आई मस्ट से कि जो हम बहुत ही जिसका हम एलैबोरेशन देंगे एनवायरनमेंट का विद रेफरेंस टू द सम ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, दैट वी विल डील टुडे इन द एनवायरनमेंट. अगर आपको बेटा पता होगा कि हमारी सराउंडिंग में हम क्या कहते हैं कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. ऑफ कोर्स कि हम अगर हम क्लासरूम में बैठे हैं तो हम आसपास में क्या देखते हैं, हमारे पास बुक्स होते हैं, बैग्स होते हैं, डेस्क्स होते हैं, चेयर्स होते हैं, अलॉन्ग विद आर क्लासमेट्स, आपके बैचमेट्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं. अगर पास में अगर आप खिड़की से देखते हैं, विंडो से देखते हैं, यू कैन समटाइम्स सी सम plants, or even maybe the animals. If your school is on roadside, the animals may be roaming around. Similarly, if you are staying at home, तो बेटा होम में क्या होता है, घर में हम क्या देखते हैं कि घरों में प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं. तो इसके अलावा जो रूम होता है, जो हमारे पास और भी जैसी चीज़ें, बुक्स होते हैं, घर में यूटेंसिल्स होते हैं. सो मैनी थिंग्स आर देयर इन आर होम, आई एम टेलिंग यू, विच सराउंड्स अस. तो इसको हम हमारा एनवायरनमेंट बोलेंगे. तो लेकिन अगर हम इसको एक प्रॉपर सिस्टमैटिक डेफिनेशन दें एनवायरनमेंट का, और सिस्टमैटिकली अगर हम इसको डिफ़ाइन करना चाहेंगे, हमें पता है कि पूरा जो हमारा ये यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में जो है कुछ प्लैनेट्स मौजूद हैं. पहले तो हम कहते थे कि 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अब जो प्लूटो एक प्लैनेट था वो डिस्कार्ड हो चुका है. एंड नाउअडेज इन आवर हैंड वी हैव 8 प्लैनेट्स एट प्रेजेंट. सो आउट ऑफ दीज 8 प्लैनेट्स, अर्थ इज द प्लैनेट दैट इज बीइंग ब्लेस्ड विद मैनी important features. Okay, earth is one of such planet where the life can exist. It's only on the earth where life exists, or it supports the continuity of life. And the reason is the things, the elements which are required for continuity of the life. It includes some of the abiotic factors and some are biotic factors. Okay kids, so now if we have to define the abiotic and biotic, we must know that abiotic includes all the physical features, or I must say all the non-living components of the earth. And when we are talking about the biotic components, it includes all living forms or which has life in it. तो बेटा हम क्या बोलेंगे कि हमारे अर्थ में जो प्लैनेट अर्थ है, उस दैट इज़ बीन ब्लेस्ड बाय नेचर, बाय गॉड, विद द फीचर कि इसमें जो कंपोनेंट्स है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों ही मौजूद हैं. और ये फीचर्स जो हैं, एक्चुअली द एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं अर्थ में, तो वो ऐसे हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट को सपोर्ट करता है. और यही दोनों बायोटिक और एबायोटिक जो मौजूद है, लिविंग और नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स मौजूद हैं हमारे अर्थ में, इट फॉर्म्स आवर सराउंडिंग. यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं बेटा कि द प्रेजेंस ऑफ एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स. वी आर नॉट डिस्कसिंग एनीथिंग मोर about these components here. Just if the biotic, that means the living,
and some of the abiotic, that is the non-living components, are present or it's surrounding us, encircling us, we will say it is the environment. If we have, thus we can define environment as, the word environment has actually come from the word environ, which means to encircle, or we can say it means to surround. So, how will we define environment? Are the things that encircle us, the things that encircle an organism, or the things that surround an organism is the environment of that particular organism. Now, if in the environment these components interact with each other, sometimes it can happen like, if we are saying the abiotic, we are, let me say, these are the non-living components and can include things like what? Temperature, sunlight, rainfall, etc. Similarly, when we are talking about the biotic components, we will talk about the plants, we will talk about the microorganisms, we can talk about even the humans, etc. And if we find in our environment that either the abiotic components are interacting with each other, or biotic components are interacting with each other, or elseways we can say the both abiotic and biotic components are interacting with each other, that is what forms actually the ecosystem. So, how the ecosystem is different from environment? In the ecosystem, the components again are two, that is, one is biotic component and another is abiotic component. And if these abiotic and biotic components happen to interact with each other, we will say that it forms the ecosystem. Now, in a more detailed way, how does the ecosystem components interact with each other? What for do they interact with each other, and why and where do they interact with each other? That is the thing we need to find in detail, and that will give us the elaborate concept of ecosystem. So, before moving to all these things, I would like to just tell you here, this ecosystem, actually it's the word that has been coined by टेंसली, और जो ये टेंसली था बेटा, टेंसली जो है वो एक ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे और इन्होंने 1935 में ये टर्म जो है इकोसिस्टम उसको कॉइन किया। तो इकोसिस्टम कॉइन करने के बाद अगर हम इस इकोसिस्टम वर्ड को एनालाइज करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें हम देखेंगे कि हमने पहले ही बताया इट एक्चुअली हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ दैट इन द एनवायरनमेंट we say only presence of biotic and abiotic components, but here the important thing that we need to focus is interaction of these components that are present in the environment. तो ये word जो interaction है, it seems that it's a very simple one word, but it has an emphasis, it has a significance of its own while defining the ecosystem. If we डिस्कस अगर हम इस इकोसिस्टम को
इलैबोरेट करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे, तो हम क्या देखेंगे बेटा यहाँ पे कि जो टेंसली ने डिफ़ाइन किया इकोसिस्टम को, उन्होंने बताया कि जो ये इंटरेक्शन है लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की, ये बहुत ही ज़रूरी है। अब ये क्यों हो रही है इंटरेक्शन, कैसे होगी इंटरेक्शन? तो उसके लिए एक तो इंटरेक्शन होगी बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। और इंटरेक्शन इसलिए होगी कि एनर्जी जो है वो फ्लो होनी चाहिए बेटा। और दूसरा रीज़न जो है, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं वो कंटिन्यूटी में चलते रहें, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स वो चलते रहें। अब जो ये इंटरेक्शन होगी, हाउ विल इट अकर? इट विल अकर थ्रू द फूड चेन। तो ये तीन चीज़ें जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अंडरस्टैंड करने के लिए। एक तो है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है उनको आपस में इंटरेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लिविंग थिंग्स में हम सबसे पहले हम प्लांट्स की बात करेंगे। अगर हम प्लांट्स को लेते हैं, हमें पता है कि ये अपना फूड खुद ही बनाते हैं, सिंपलर होते हैं कंपैरेटिवली टू द एनिमल किंगडम। और इनमें जो है फोटोसिंथेसिस होता है जिससे ये कैपेबल होते हैं प्लांट्स अपना फूड खुद ही बनाने के लिए। जिसे इनकी फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए इनको कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होता है। जैसे कि आपको बेटा पता होगा, आपने चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेसेस में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, सनलाइट है, ठीक है, और क्लोरोफिल तो है ही। तो क्लोरोफिल के अपार्ट जो इसको रॉ मटेरियल चाहिए वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट कहाँ से मिलता है प्लांट्स को? ऑब्वियसली दीज आर एक्चुअली द एबायोटिक कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं और ये प्लांट्स हासिल करते हैं। और इन एबायोटिक कंपोनेंट्स की वजह से जो है इनकी जो लाइफ की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट्स में, वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं ये बहुत ही हेल्प करते हैं किसके लिए? बायोटिक फैक्टर के लिए, जो कि प्लांट्स हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी पूरी करने के लिए। अगर ये रॉ मटेरियल नहीं होंगे, अगर ये एबायोटिक फैक्टर्स नहीं होंगे या ये कंपोनेंट्स मौजूद नहीं होंगे, तो प्लांट्स जो है अपनी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो एक बहुत ही वाइटल मेटाबॉलिक एक्टिविटी पाई जाती है प्लांट्स में बेटा, वो कंप्लीट नहीं होगी। यस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है? इंटरेक्शन हो रहा है किसका? जो कि मैंने पहला पॉइंट बताया, बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब इतना ही नहीं, देखो बेटा जब प्लांट्स उगते हैं उनको कौन खाता है? जो हर्बीवोर्स होते हैं, यानी कि जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर उनको प्लांट्स को वो ऑर्गेनिजम्स नहीं खाएंगे तो जो प्लांट्स की जो पॉपुलेशन है वो जो बैलेंस मेंटेन की हुई है हमारे एनवायरनमेंट में, वो बैलेंस जो है बेटा वो टूट जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इट विल नॉट कंटिन्यू टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस इफ़ the animals like herbivores will not be present in our environment. So this is very important for maintaining a balance. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सिर्फ एबायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन ही नहीं, बल्कि बायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन, यानी कि विद इन द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड बिटवीन द एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, दोनों का इंटरेक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो this is what the first step that Tensley has
जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इकोसिस्टम को डिफ़ाइन करने में जो हमें बताया है दैट इज़ कि इनका इंटरेक्शन होना चाहिए. तो इंटरेक्शन यहाँ पर हमने देखा, इंटरेक्शन कैन बी ईदर बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक और इट कैन बी विद इन द biotic component and another biotic component to maintain the balance and to run the continuity of life on the earth. Secondly है कि अब ये क्यों जो है इंटरेक्शन होती है, इससे होता क्या है. जब इंटरेक्शन होती है, जब मान लो हमने प्लांट्स और हमने हर्बीवोर्स की बात की या प्लांट ईटर्स की हमने बात की, डेफिनेटली हमें पता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो है एक एनर्जी लेवल मौजूद होती है. तो द content of this energy which is present at each level in an organism, that proportion, I mean certain amount of that energy is being transferred from one trophic level, from one organism to the next. So what happens when there is interaction between the components of environment, or when we will say when there is interaction between the components of ecosystem, so what happens with that interaction? The energy flows from one trophic level, from one food chain to another. Secondly, the significance of this interaction is that it helps to run the biogeochemical cycles. For example, we know the components like the nitrogen, like carbon, the oxygen, or we will say the compounds of these elements like carbon dioxide is there, water molecules are there, and which are very very important for running or maintaining the life on the earth. And these elements or these molecules or compounds, I must say, they are run by biogeochemical cycles. And if here I would like to mention that you had a chapter in class 9th biology in which you have done in detail, you have studied in detail about biogeochemical cycles, and these biogeochemical cycles actually are run when there is interaction between the components of ecosystem. So this is another reason or another significance of interaction of components of ecosystem. Then how it occurs? If there is interaction and there is transfer of energy, or it helps in running of the biogeochemical cycles, so how does it occur? What is the way it is following while undergoing this process, that is the food chain. When one organism has certain amount of energy in it and it is present at a one trophic level, so another organism which is interacting with the previous or the one which is at the first level of the trophic, which is present at the first trophic level, so definitely what happens there is it forms a chain, and that is known as a food chain. Food chain is where an organism eats and is being eaten up by another organism. So this food chain helps to run the biogeochemical cycles. It helps to maintain the energy flow from one trophic level to another, and it all happens because there is interaction between the abiotic and biotic components, and all these three steps together, it helps to maintain, it helps to form a suitable, or we will say a stable system, that is known as ecosystem. Okay, so if in short we have to define the ecosystem, how we will define it now kids? हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे इकोसिस्टम को? Ecosystem is interaction between the biotic and abiotic components to maintain the energy flow and continuity of biogeochemical cycles through the food chains in order to form a stable system that is termed as ecosystem. So it was all about the environment and ecosystem. And if we will see the ecosystem in detail here through a flow chart, I will show you that ecosystem is
been categorized into, it has various categories, it has been classified into various categories. Ecosystem, classification of ecosystem, okay, classification, कैसे हम क्लासिफाई करेंगे इकोसिस्टम को? ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, second is on the basis of duration, नेचर को अगर हम बोलेंगे तो नेचर में हमें देखना है वेदर इट इज़ आर्टिफिशियल और इट इज़ नेचुरल. ड्यूरेशन में हम देखेंगे शॉर्ट, टेम्पररी एंड परमानेंट. Okay children, permanent. और थर्ड जो हम देखेंगे यहाँ पर, that is based upon the size, it will tell us about whether the ecosystem is small or big. Now this classification, which is based upon certain factors, one is the nature, duration and size. Based upon the nature, we will say the ecosystem is either artificial or it is natural. Artificial is man-made and natural is the ecosystem that is being gifted by the nature, by the God to us. On the basis of duration, we will find out whether the ecosystem is temporary or is it permanent, and based upon the size of the ecosystem, it will tell us whether the ecosystem is small or large or big, I must say. And all these three types of ecosystems which are based upon the certain factors, the factors like the nature, the duration and the size, this we will discuss in another class. And just to quickly have a recapitulation of today's lesson, what we studied is, we studied about the environment. Environment is nothing but our surrounding, which includes both components of biotic and abiotic in nature. Here we don't have to discuss about their interaction, it is just the presence होनी चाहिए biotic और abiotic की, living और non living की, उसको हम environment कहेंगे. अगर ये कंपोनेंट्स जो बायोटिक और एबायोटिक है, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग, अगर ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं बाय टू मेंटेन द एनर्जी फ्लो, टू मेंटेन द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, और किसकी हेल्प से करते हैं? थ्रू द फूड चेन, तो उसको हम इकोसिस्टम कहेंगे. और अगर हम क्लासिफिकेशन फिर देखेंगे इस इकोसिस्टम की, जो कि हमें वर्ड टेंसली ने दिया है, जो कि एक इकोलॉजिस्ट थे, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट थे 1935 में. एक इम्पॉर्टेंट इकोलॉजी की ये टर्म जो है ये हमारे सामने टेंसली ने रखी है. तो इस इकोसिस्टम की जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द नेचर, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हैं, आर्टिफिशियल और नेचुरल. बेस्ड अपॉन द ड्यूरेशन हमारे पास टेम्पोररी और परमानेंट है, और बेस्ड अपॉन द साइज हमारे पास स्मॉल और बिग इकोसिस्टम है. थैंक यू चिल्ड्रन फॉर टुडेज क्लास, एंड वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास.